All right. So you guys told me that you have learned what is JSON server running, right? Right. Chicken. So first thing first, do we remember what JSON is? What is JSON? What's this thing? JSON array of objects, correct? Anything else? JavaScript object notation, okay. Okay. So it's basically formed of two fundamental components, right? We have an array and we have an object. Yes? 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 Right? Right? So now if I go and create an object, something like this, let's create an array. उसके अंदर I have let me name it data, and in this, is ID a must in JSON? Should ID be there? For sure in JSON, right? It should be there because we need to identify that particular data, right? So ID is going to be there. Let's say I have a title or something, right? And this is home, right? And then we can have multiple data like this thing, right? With updated this. So this is basically your JSON data, and we have been dealing with JSON data for a very long time, right? So there's no issue समझने में कि JSON है क्या, data क्या है, right? दो छोटी सी बात आती है यहाँ पे कि can we convert things into JSON? What does this means? So देखो, we are not going to use like data for ourselves, right? हम सिर्फ अपने लिए डेटा यूज नहीं करने वाले. We'll have to create that data, maybe post it or something, right? और उसको we'll have to share it on browser, है ना? ब्राउजर पे हमें वो डेटा चाहिए दिखने के लिए, ठीक ना? ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर इज मोस्टली गोना एक्सेप्ट योर स्ट्रिंग्स एंड ऑल, राइट? सो लेट्स से this thing. Now here's the thing कि let's say I have a server, right? I have server, ठीक. एंड ये जो बैकएंड साइड है, यहाँ पे क्या होता है? We create something which is called endpoints, right? I hope endpoints अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि किस चीज को बोलते हैं. The queries that we pass, right? Query नाम सबको समझ आता है. Anyone, any doubts in what query is? Query people, query, any issue when I say query? Okay, if you don't remember, let me just quickly jog your memory. This thing, right? fakestore.api.com, HTTP से लेके यहाँ तक, this is your main port या फिर website, right? And if you go and add things in front of it, and if you keep on adding things in front of it and it gives different result, that thing is basically your query, right? Usually query क्या होता है? It usually comes as question mark, but for now let's just keep this in mind कि जो website है उसके अलावा जो भी thing हम additionally add कर रहे हैं to access more data, that's going to be called query. Query clear hai? Query, any doubt what query is, right? So we have these certain endpoints या फिर queries backend sides, right? Now this query usually is in format of JSON, ठीक. Now इसका नाम JavaScript object notation है. That doesn't mean कि other languages don't use that, right? Don't you think a scripting language like Python would use data something like this way? इस तरीके से डेटा यूज नहीं कर सकते क्या, given that it's just named JSON? Yes, no, anything might be. Okay, so other scripting languages can use JSON also, and it is basically even standard है कि डेटा शेयर करना है, go for JSON, right? तो JSON sharing is a standard sort of, ठीक. Now if you're sharing something in form of JSON ना, क्या होता है? Browser wants it in format of string,
right? So that it makes it universal. ठीक, क्यों यूनिवर्सल क्यों बनाना है? बिकॉज देर आर अदर लैंग्वेजेस विच आर स्ट्रिक्टली टाइप्ड, जो कि दे वोंट एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस कि एरे के अंदर यू हैव ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, राइट? उसके अंदर यू कैन हैव स्ट्रिंग्स एंड ऑल, राइट? इट वोंट एक्सेप्ट देम. सो वी डोंट create an error in that phase. We send that as a single data type, which is string. ठीक, तो now just JSON data has to be converted into that string, no? Right? JSON data has to be converted into string for this format. So have we learned a command which converts a JSON data into string? And I can assure you we have. हमने पढ़ा है. रितेश करेक्ट, ज्योति करेक्ट, राहुल करेक्ट, अभिजीत ठीक है करेक्ट. Do you guys remember something like this? JSON.stringify and उसके अंदर data. Have we seen this thing ever? देखा है क्या? Right? देखा है. Where? किधर देखा है? In local storage. ठीक, तो see again, browser was storing data in form of your strings, right? Or rather JSON string. तो हमें क्या करना पड़ा था? We had to convert our data into JSON string, right? ठीक है. We have converted into JSON string. Now in our UI we want to show it, right? ये string को we want to show it on UI. तो can we directly show a string? Can we iterate over string? जिस तरीके से data structures बने, is that possible? No, right? We can't mutate string. हम string में update नहीं कर सकते, right? So what's the solution? Do we have to convert JSON data into string and then string back to JSON data? Yes. Do we have to do that? Guys, 1-0 क्या हुआ आज? ठंड पड़ रही है क्या? Why are there so less responses? Like 6-7 लोग ही बोल रहे हैं. What about others? बाकी लोग कहाँ गए? I mean cap 7 बोलने वाला बैच था ना? ठीक है, प्रेजेंट कितने कितने लोग हैं? 1 in chat. बाकी लोग गाने सुन रहे होंगे. ओके, ठीक है, मेरे नेट, दैट्स फाइन. ऑल राइट, ठीक है. सो converting, wrapping it double quotes or something. Converting JSON into string means wrapping, yeah, somewhat like that. All right, so quickly यहाँ पे we have a backend, right? Backend क्या करता है? Backend is going to be similar for your UI, right? Keep that in mind. अच्छा, you guys might not know that, but backend लिखने के ना, there are few ways, right? So you can either write it in Node.js वाला framework, or you can write it in Spring Boot and all, right? Or you can write it in Django and all. ठीक, इतने famous है, you might have heard about them. Yes, no? Ever heard about these things, people? सुना है? Right? So here's the thing. This one, this ऐसे नहीं लिखूंगा, it will take time. This Node.js, what language is this written in? Guesses? Correct, JS, right? This Spring Boot one, any guess? Correct. So this Spring Boot one is written in Java, and this Django one, it's written in Python. ठीक, तो अभी if a organization creates a backend in a language, right? Maybe they have created it on Django. So क्या हम front end, do we have to create it in Python, या फिर we can use something else? Right? We can use anything, right? Backend and front end systems are separate. ठीक, they're not connected at any fashion except for the links, the endpoints. उसको छोड़ के backend and front end systems are not connected. ठीक, तो आगे चल के maybe you guys will learn your backend in Node.js only, right? But trust me, even if I write a backend in Spring Boot, no, and I send queries and all, so you will be able to use that in React and your JS also. That's fine. ठीक, तो now different languages have different ways of dealing with data. अलग अलग लैंग्वेजेस के पास अलग अलग वे है डीलिंग डेटा का, राइट?
So again, if you don't remember, this one is loosely typed, right? The Javas are your strictly typed language, right? If you have defined an array for string, na, us array ke andar you can only store string, no number, right? And again, our Python is again loosely typed, right? So there is variation, diversity hai, but we need to make something common, right? Kuch to common rakhna padega, so that this thing, this connection doesn't get interrupted. Yes, yes, वो चीज उस चीज का काम आपका ये करता है, स्ट्रिंग, और रादर लेट मी जस्ट नेम इट एज जेसन स्ट्रिंग. ठीक है, राइट? तो दैट डेटा थिंग. संतोष, फॉर अंडरस्टैंडिंग, या यू कैन. ऑल राइट, ठीक है. So you can pass data in this format. Now, once I have received data in format of JSON string, which can be done by using JSON.stringify, I have to use that data, right? तो मुझे क्या इस string को shall I parse it? Parse करने का मतलब decompile और क्या decompile? I don't think that's a word. Maybe decompress. Help me out here. Back to array. Okay, ठीक है. That's fine. Right? So basically original format में convert करना है. तो did you guys remember we wrote JSON.parse? Right? So that's basically how JSON data goes, right? Server से we convert it into stringify, then उसके बाद the data is sent, and जब हमें use करना होता है we can go with JSON.parse, right? All right. So we have been using this website a lot, right? हम यहाँ से we were getting data, right? Even we were showing it in our product page, right? So we were getting it, but were we converting it? Were we using JSON.parse anywhere? No? Okay. Okay. एक बार फिर से नजर डालो इस चीज पे. We are fetching here. Are we converting JSON data and are we parsing it anywhere? Like again, guys, if you don't remember, उस कॉन्सेप्ट में जो हम बात कर रहे थे कि द थिंग्स आर गोना हैपन इन हाइंडसाइट, राइट? आपको सामने विजिबल नहीं होगा. सो दिस res.json ना, this function, this method is basically parsing your data. ये वही कर रहा है, right? Parsing and giving us JSON data. All right. So in hindsight, this is what happened. All right. So just basics of JSON, is that clear? How, why, and what JSON? Is that clear? किसी को कोई डाउट JSON में क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, कैसे है? नहीं है? ठीक है, ठीक है. That's great. Let me run our application real quick. देखो एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं क्या बनाया था. So yeah, I'll have to run it from HTML file. So let me get back to product.html and यहाँ से I will run it. ठीक है, तो we created our web page जिसमें हमने क्या किया था, we created a dynamic sort of select type, right? And we were showing the data, right? And हम क्या कर रहे थे, हम basic filtering कर रहे थे, like jewelry should be just giving us jewelry, men's clothing should be just giving us men's clothing, right? इसमें किसी को doubt anything at all? No, no doubts, no doubts. ठीक है, ठीक है. तो now we were using a free API, right? Now this thing has a bit of limitations, right? वो limitations क्या है कि we can't have our own data there, right? वो हमें कुछ अपना data दे. Yes, yes. So for that, to fix that, we have something which is called कौन सा सर्वर बनाना सिखाया प्री क्लास में? JSON, right? So you have something which is called JSON server. Take now the name says JSON server npm. What does npm means?
npm means anyone. मैंने I think I told you guys even कि एक बार देख के आना npm के बारे में. हाँ, I told you guys. देख के आए हो क्या? What is npm? Node Package Manager. ठीक है, करता क्या है? So let's say you have a application, right? But इस application में you want to use multiple different stuffs, right? So let's say आपको कोई ID create करना है या फिर you want to read like uploaded files like music and videos. तो आप क्या करते हो? You don't go and write that entire piece of code, right? Because it's gonna take very much time. तो आप क्या करते हो? There is a depository which is called npm Node Package Manager. We access that npm and हम उस npm से we get that package installed in our page, right? तो हम जहां पे भी हमें चाहिए in our application we get these packages installed and they help us there. ठीक, तो external packages है, we'll have to install it in our application, right? So again, let's go for documentation. Here's the JSON server and it says install npm install JSON server, right? Yes, pre-written code. तो हमें क्या करना है? Let me just copy this thing and I'll go and let me just zoom it out a bit. I'll go in my terminal and इसमें I'll go in my folder, right? So which is basically ES6 ecom. So advances, I'm gonna visit L6 ES1 and in that we have codes, CB codes, and in that we have ES. Okay. So in our ES-ecom1, I'm gonna install that, right? So npm install JSON server. Now let me install it. ठीक है, तो इट हैज बीन इंस्टॉल्ड, राइट? तो अभी जब मैंने उसको इंस्टॉल किया, यू माइट हैव सीन कि वी हैव फ्यू न्यू फाइल्स. This one is node modules, right? It's a very big package, so you don't have to go there. It's directory mein, you don't need to do anything. Actually, you don't need to do anything with any of these three files. So node modules, you don't have to worry about that. This one also don't have to worry about that. This thing, package.json, again, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, but you just have to keep this in mind कि this is where all the dependencies are mentioned. Right? So let's say if you're creating a website and you have 25 different dependencies installed, ठीक? So that thing is gonna be updated in your dependency section, ठीक? So let's say if someone else installs your application, they'll have to install these dependencies also, right? मैं अगर इधर एक application लिखता हूँ which takes help from JSON server, if someone else tries to run it, they should be able to access all these dependency, right? Right? So that thing they have to install, and for that they'll just run this, right? And if you want to install all the dependency in your file, you just have to go and run npm i. ठीक, ये क्या करेगा? npm i is going to install all the dependency that is present here. All right, so npm i. ठीक है. So far any doubts how to install that? अभी run नहीं किया है. I haven't showed you guys कि क्या करना है. It handles all the packages, all the dependency packages that are written in your application, right? अगर आप npm i करोगे तो it's gonna install all that. All right, people, any doubts so far? Can you repeat what dependencies are? These dependencies are nothing but the packages that you are downloading or installing from कहाँ गया? Node Package Manager, right? npm say. For now we have installed JSON server. There are multiple different packages, right? You can go and search, multiple different packages are here. So if let's say you are installing 10 different packages, those सारे packages ना, they'll get noted down here as a dependency. All right. So yeah, let's say if we go and if we let me see.
I mean, we don't have to actually install and all. That might take time, but you guys get the idea. npm I is for what? यहाँ पे dependency notes होती है, right? तो if you have like, if I have sent you guys the file, right? मैंने file आपको send किया, तो you are getting these files, but you haven't installed this JSON server, right? So this code won't run in your system. तो वो कोड रन करने के लिए आपके सिस्टम में आप क्या करोगे? यू विल राइट npm I'll rather write it here so that I don't have to erase it. npm I ये क्या करेगा? It checks and installs, or rather automatically auto install all the packages present in dependencies. Dependencies, right? So yeah, info of packages, it's like just the basic names. Take the JSON server naam hoga and what version it is, that will be there. ठीक guys, clear है just the installing part. अभी run भी नहीं किया हमने. Shall we run it? Shall we run it? Shall we run it? Okay. So for running it, you will be writing JSON server, and I not exactly clear, but I think we have to write watch and then db.json. Okay. So if we write this and if we run it, so you guys might have noticed कि हमने एक और file add किया है, right? We have added a file which is called db.json. Now this is the file which we are gonna update. ठीक, तो एक बार let me quickly walk you through this file. तो db.json is basically your database.json. इसमें you are gonna create your endpoints अपने आप से, right? तो basically let's say कि we are creating 3 different endpoints by naming the things like this, right? So let's say मैंने post बनाया, right? So this array is gonna have this data. Then I have created one more array which is comments. This array has these data, and then profile, this array has these data, right? So I have hosted those URL on like my local server by using this, right? So if I go and open this this file, right? So let's say if I open this thing, if I go and open it, profile, you'll see कि हमें वो profile page पे जो भी data होगा ना, we are able to access that, right? If I go and update it with comments, so it's gonna update that data with that, right? So if I go and in this comment section, if I go and create few more data, तो यहाँ पे क्या होगा? You're gonna show these data too. So if I go back and if I refresh it, we are getting all those data. ठीक, so this is basically your JSON server. That's pretty much all. First you have to install it and then you have to run it. Run करने का command, let me just copy and paste it there. So you just have to go in here and यहाँ पे let me just write those commands. This is for JSON server, and first thing, install it, right? And the second step is basically run it, right? Run it के लिए you have to go and write this. All right. And let's say if you want it to run on your custom port, right? If you don't want it to run on 3000, you want to run it on custom port, you can just go and write hyphen port. And उसके बाद you can write your custom port here. Let's say if you want 8080 or anything, right? Custom port. All right. So installing clear है. How you run it, is that clear? JSON server run करना सीख गए? Fine. ठीक है? Then you just have to worry about this file which is called db.json.
ठीक, अभी क्या करते हैं, दिस फाइल हैज अ फॉर्मेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव मल्टीपल स्मॉल स्मॉल एरेज एंड वो एरेज हैव डिफरेंट डिफरेंट डेटा, राइट? लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग, ऑल राइट, बिकॉज हम क्या करने वाले फॉर नाउ, वी आर यूजिंग अ डिफरेंट यूआरएल, राइट? फेक स्टोर एपीआई का यूआरएल यूज कर रहे हैं. What we are gonna do is we're gonna update all the data in our db.json and we are gonna use our JSON server only. ठीक, तो मोटो क्लियर है, क्या करना है हमें? फिलहाल यूआरएल पकड़ना है और उसको अपडेट करना है. ठीक, तो पहले तो वी शुड फिल सम डेटा इन आवर db.json, राइट? राइट, तो इन आवर product page file, what data are we fetching from our URL fake story page? We are fetching categories का array, we are fetching categories का array, right? And we are fetching products का array. So basically I have to create two endpoints, right? First one will be products, right? And this is gonna be an array, and second one is gonna be our categories, right? And there you go. So there's the product and here is the category. Let's get the data from our fake store only. यहीं से we are gonna get our data because we are lazy. तो हम अपना data बना नहीं रहे अभी के लिए. We'll create shortly, but अभी के लिए for now let's just get this data. So I'm gonna get 10 of these data. I'm just picking objects, सिर्फ objects ले रहा हूँ because I'm gonna put those objects inside this array. Right? So if I go and put these objects, ठीक, now एक काम करते हैं, let's go and check our local storage and इस पे what should I write if I want to access, let me keep it side by side. If I want to access products, what should I write? Products, right? So I'll go and I'll write pro. Check, and if I press enter, you'll see we're getting all the data, all 10 of the data that we have added. All right, उसके बाद हम क्या ले रहे थे? We were getting the categories वाला array. So let's go and update this one real quick. Let's go and यहाँ पे we had our categories, right? This one. So let me get this thing and let me update it there. So categories, there you go. And if I want to access categories, I'm just gonna go and write categories. Take, if I press enter, I have these things. Clear? So is it clear how we are accessing the data at least? Data access कैसे कर रहे हैं? Is that clear? Right? ठीक है, ठीक है. Now in fake store, we were able to do multiple things, right? जैसे कि like, let's say if I go in product page, right? This is basic fetching, right? We were doing dynamic fetching. उसमें क्या कर रहे थे? We were updating our filter based on whatever value we were passing, right? So were we accessing any of those endpoints? Were we accessing products or were we accessing just categories? नहीं, यहाँ पे we were accessing products and then categories and then a certain value. Yes, no, right, right. So can we do that in JSON server? Let's say if I'm accessing products, right? So is that all? Let's go and check that out. Take, so once you have run it, you have these routes. So routes and endpoints are almost similar. So you have get, you can make post, put, patch, and delete request. That's fine. We'll see that later. But okay, so yeah, here you go. So if you want to access, let's say if you want to access post wala data, right? So you have written post in that URL. And then if you have to access the ID by one, you can go and write one. So if I go and write products /1,
If I press enter, am I getting only the object which has ID 1? Right? If I go and write 7th, I'm gonna get that. But this is not what we want, right? हमें क्या करना है, or what we have done in our page is that we were filtering it based on category, right? So first thing first, we are accessing that product के अंदर we are accessing category वाला key, right? We are accessing this category वाला key. Yes, no, people, come on, guys. Right, right. तो अभी क्या हो रहा है? Are we trying to access something specific? Right? Specific नहीं, you can just call it filtering. Are we trying to filter based on some condition? Right? तो जब भी आपको condition लिखना होता है ना, what you do, you basically access your endpoint and उस पे you go and write question mark. Right? तो इस question mark का मतलब क्या हुआ? We are creating a query. हम एक question पूछ रहे हैं to our endpoint. Right? हम अपने route से question पूछ रहे हैं. What I'm asking is, if category is equals to men's clothing, I want that, right? So I don't think we need to write that. Take, I'm saying if products has a category of men's clothing, please show me. So if I press enter, am I getting only the data which has category as men's clothing? Only those data. So I'm getting only that. Right? So this is how you can create categories and you can raise queries, right? And this thing can happen for most of stuff, right? तो यहाँ पे जाके if you go and write title and ये title put करोगे ना, so let's say let me just give this thing, and if you go and write question mark title, right, equals to this, and if I enter it, I'm just gonna get that thing. All right, तो it's very easy. All you have to do is जिस भी चीज के साथ आपको query put करनी है ना, आप उस चीज को question mark के साथ लिखो and then write a equals to and you can go for it. Clear? Working on any website? No, it works for only JSON server. ठीक? If you're going and accessing fake store का API, then of course what you have to refer, कोई भी API पे जाने से पहले सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली चीज किसी भी API पे डॉक्यूमेंटेशन खोलना है, right? And you have to see ki how you are getting all those data, right? Fetch is gonna be same. The only thing that will be differing on most of the website is gonna be your URLs, right? And वो भी ज्यादा differ नहीं करते. It's almost universal. ये query करने का तरीका and all, but कुछ चीजें differ करती है. That is based on there, right? So you see यहाँ पे भी query is there, but again documentation I will always recommend. ठीक, there is no universal sure short way of going for that, but हाँ documentation if you're reading it, पढ़ रहे हो, that's fine. Clear है? Clear है? ठीक है, ठीक है. So now we know how we can make a fetch request on our products, and we know कि how we can filter it based on category. Can we go and update our application now? क्या हम अपने application को अब update करते हैं? Right? तो let's go and update our application. हम क्या करेंगे? We're gonna remove all those fake store वाले URL and we're gonna put our local storage वाले URL. ठीक? Before that, tell me one thing. Tell me one thing. Does this thing looks like we are making multiple fetch requests, right? हम multiple fetch request मार रहे हैं. Let me show you guys. We're doing these two here. We are doing these two here. Are all of them almost alike? Jyoti, again, guys, you have to read documentation. थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, तो you will see this thing, right? Condition. So this GT means greater, right? This GTE means greater than or equals to LT. तो ये जाके आप condition लिखो, try it, you will be able to work around it. All right? ठीक है. तो again, read documentation. अभी नहीं, थोड़ा अभी lecture पे ध्यान. Right?
तो ठीक है, we are making these multiple fetch requests and do you think we can make this thing dynamic? थोड़ा यहाँ पे कोड घटा सकते हैं क्या? Can we decrease the usage of code there? Store in variable, okay, okay, ठीक है. We have written 4 different fetch here. We might be writing more. ठीक, can like when we are fetching, we need 2 things. We need a URL. That's all. बस URL चाहिए for fetching. The rest everything is same. The only thing differing is this URL. In here also this URL, right? So do you think if we can create a function जिसमें बस ये 2 lines of code लिखे हैं and we just run that function with a parameter of URL, we will be creating like dynamic sort of fetch. Yes, yes. So let's actually do that. So let's create a fetch operator, right? And what should we provide this fetch operator? What should this be accepting? What is the one thing that we need or that is going to be different in each fetch? हर fetch में एक क्या सी चीज different होगी? Endpoint URL, correct? Correct. So we should be accessing URL here, right? उसके बाद if I go and write let res equals to await fetch and इसके अंदर I'm writing URL. Should I be able to fetch that? Why am I getting error? Await में मुझे error क्यों मिल रहा है? Anyone? Correct. Abhijit, Harshit, Jyoti, Sheikh, संतोष, राहुल, करेक्ट करेक्ट गाइस. एसिंक नहीं लिखा है, राइट? तो एसिंक बनाना पड़ेगा, राइट? क्विक रिविजन हियर इटसेल्फ. व्हाट डज एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स? एसिंक फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? अवेट, ओके ओके. एंड अवेट क्या करता है? एसिंक इज गोना रिटर्न यू अ प्रॉमिस, राइट? एंड दैट प्रॉमिस इज डेल्ट बाय यूजिंग अवेट, है ना? अच्छा, यहाँ पे छोटी सी चीज है. आई डोंट थिंक आई हैव कवर्ड इट इन लास्ट सेक्शन. मान लो इफ दिस async function promise throws an error, तो how do we deal with that error without messing up our code? So we have a if else type of statement which is called try catch, right? So we write try this piece of code. If this runs, if this works fine, then you can run that, else you can throw an error. So try के अंदर we write our usual code, right? So let me write let data equals to await res dot json, right? And then we can run a function, and catch me we can just write a console dot log and print that. ठीक, तो again if you want to catch errors in your async await functions, you can go for try and catch. ठीक है, all right. So now that we have like fetched the data, we have converted into JSON. Should we return that data? Return that data, right? So we have basically created a function जो कि it's fulfilling this thing, right? So we don't need to go and do this again and again. All right. So I don't have to go and do this. अभी मैं क्या करूँगा? I'm just gonna go and call fetch operator, right? Let me name it as data, and this will be equals to fetch operator, right? And इसके अंदर in form of URL I can just pass my URL. All right, ठीक है. Quickly बताओ again. This is async await function. तो ये क्या रिटर्न करने वाला है फिर से? Overall, it's gonna return a promise, right? So if we are calling that function, it's gonna give us an error क्योंकि ये promise return करेगा. You have to again await it, right? अगर async function को call कर रहे हो ना, just keep this as a thumb rule. You'll have to await it. ठीक, so we are doing that. Can we replace this thing also? This piece of code also, can we replace it? Can we replace it? Right, let me do that. I'm gonna write let category categories equals to await
and again I'm gonna call for fetch operator and इसके अंदर I'm passing category URL. All right, ठीक है. और कहाँ यूज किया है? We have used it here. तो यहाँ पे भी we don't have to do that. Let me just store this URL somewhere and let क्या नाम दूँ इसको? This is category and where, so I can name it URL1, right? Just for the sake of simplicity, that's all. So I'm gonna name it URL1 and I can comment this piece of data also. And उसके बाद let filtered data will be equals to await fetch operator and उसके अंदर we are sending URL1. Right, and let me just get this thing also. Again, I'm gonna comment this one and यहाँ पे there you go. And यहाँ पे let categories equals to await and filtered data and उसके अंदर URL. ठीक है, तो yeah, we again followed our dry principle and we saved like 6, 5, 10 and around 10 lines of code in 4 lines of code. ठीक, again, if we are making multiple fetch requests, that also goes there. We can keep on creating it based on this template. Right? अभी एक बार जाके देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अभी भी रन कर रहा है या फिर हमने मैसअप कर दिया. So if I refresh it, okay, that's still running. All right. So now that we have updated all these, let me just delete all the unnecessary lines. Let me just delete this thing also a little bit. Okay. Now that we have updated them, let's update it with our local host wala URL, JSON server ka URL. Right. So yeah, let's go and यहाँ पे let me let me just access it quickly. Products. Take. Let me just copy this URL and yeah. So products की जगह I'm gonna replace it with this URL. And बाकी जगह we are using category. So let me just put this again. Products के अंदर categories. What were we getting here? अच्छा, I guess we were just getting categories. ठीक है, तो we can just put categories there. यहाँ पे भी we can just go and update this one with categories. ठीक है, so let's go and check our code again. If I refresh it, ठीक है, on load that's fine, but filter में still there is initial code, right? So let's fix this. अभी यहाँ पे we have to use our products. So let's go for that. This thing. Now in our products, we are accessing categories and categories के अंदर we are accessing value. Is this fine? Is this URL fine or we have to update it? Fine. Okay. Question कहाँ पूछा इससे? Condition कहाँ दी इसको? Right? API different है, right? JSON server use कर रहे हैं. So we'll have to go and हमें क्या लिखना पड़ेगा? Products के अंदर search for a category with a question mark. And if that category is equals to value, then get that. Is it fine now? Right? ठीक है. So let me change this thing also. Products के अंदर categories नहीं चाहिए, हमें directly categories चाहिए. तो ठीक है, that's fine. I'm gonna just update this and I'm gonna just delete it. ठीक है, let's go and quickly check our product again. So if I refresh it, we are still getting data. We are getting 10 of that. And if I update men's clothing, right. So
ठीक है, we are not filtering it. Let me see. So let me just get this and let's go and check कि हमें मिल क्या रहा है. So if in this URL I'm putting means floating, I'm getting the data. Okay, let's see what's the issue. URL 1, this is sending data here and fetch operator is awaiting data here. So let's just console.log filtered data. Let me check that. Right. If I click on men's clothing, we are getting that. Acha, filter data is not a function. Okay. Okay. यहाँ पे गलती कर रहे हैं. This thing should be fetch operator, right? Fetch operator. Yeah, ठीक है. So if I go for jewelry, yeah, that's fine. हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था पीपल यहाँ पे इन आवर कैटेगरीज रादर देन गोइंग फॉर राइटिंग दिस फंक्शन हमने ये वाला वेरिएबल ले लिया था. ठीक है, तो द कोड वर्क्स फाइन, द वेबसाइट इज इवन वर्किंग फाइन, राइट. तो सो फार वी हैव डन नथिंग बट जेसन सर्वर सीखा एंड वी जस्ट रीफैक्टर्ड आवर कोड बेस्ड ऑन दैट. एनी डाउट्स, एनी इशू, क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को भी? नो, दैट्स फाइन, सब समझ आ गया. ठीक है, ठीक है. तो अब आगे चल के हमें दो चीज सीखना है, राइट. आगे चल के दो एजेंडा है हमारा. फर्स्ट थिंग इज बेसिकली लेट मी राइट इट इन रीडमी फाइल ताकि वो हमारे पास रहे भी. तो यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड पेजिनेशन. पेजिनेशन किसी को पता है? व्हाट डज पेजिनेशन मींस? 2 3. ओके, फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है, लेट मी टेक यू टू फ्लिपकार्ट. राइट, फ्लिपकार्ट पे गए एंड लेट्स से आई एम सेलेक्टिंग मोबाइल्स, राइट. तो अगेन टेल मी हाउ मेनी मोबाइल डेटा इज इट गोना हैव. कितने मोबाइल डेटा होने वाले हैं इसमें? कितने मोबाइल डेटा होने वाले? मिलियन से तो नीचे बोलना मत. अनलिमिटेड. ओके, ठीक है. लेट्स से इट हैज अ मिलियन डेटा, राइट. तो मिलियन डेटा स्क्रॉल पे ही दिखाता है, और डज इट हैव समथिंग लाइक दिस व्हिच डिवाइड्स इट इनटू पेजेस? पेजेस होते हैं, राइट. तो वी कैन गो ऑन डिफरेंट पेज और हमें डिफरेंट डेटा दिखेगा. दिस थिंग इज बेसिकली योर पेजिनेशन, राइट. तो नाउ दैट वी आर लर्निंग एडवांस हियर, शुड वी नो कि हाउ वी कैन अप्लाई पेजिनेशन इन आवर वेबसाइट, राइट. बेसिक जेस तो हो गई, अब हम बड़े हो गए, अब हमें पेजिनेशन भी आना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी आर गोना ऐड इन आवर वेबसाइट. पेजिनेशन होने वाला है. एंड देन क्रड में से व्हाट हैव वी डन सो फार? क्रड में से व्हाट हैव वी डन सो फार? नहीं, क्रिएट नहीं किया है गाइस, रीड किया है. अब वी जस्ट हैव एक्सेस द डेटा, राइट. अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है. वी हैवंट लाइक क्रिएटेड मे बी एडमिन वेबसाइट जहां पे एडमिन इज फिलिंग अ फॉर्म एंड इज क्रिएटिंग डेटा, राइट. तो फ्लिपकार्ट में क्या होता होगा, देयर माइट बी सम सेलर वाला सेक्शन, राइट. इन फ्लिपकार्ट देयर माइट बी अ सेलर वाला सेक्शन वेयर दे माइट सी अ फॉर्म. उसमें दिल फिल कि हाँ ये वाला डिवाइस है हमारे पास, इट हैज दीज स्पेसिफिकेशन, प्लीज अपडेट दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. हैव यू गाइस एवर सीन मर्चेंट साइड ऑफ थिंग फॉर एनी वेबसाइट? किसी ने भी देखा है क्या? मे बी Amazon, जोमैटो, समथिंग लाइक दैट. मर्चेंट साइट देखा है क्या? गूगल पे, राइट. सो उसमें डू यू गाइस सी कि आपको अपने लाइक यू हैव टू फिल द डेटा ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अपना डेटा, राइट. द प्रोफाइल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन,
और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इट गोज एंड लुक्स लाइक दिस, राइट? तो दैट फॉर्म शुड बी देयर फॉर क्रिएटिंग इट, ठीक? तो if we get time, I hope we should, we'll at least cover that form section, right? तो admin बोल दिया तो चलो अब admin ही बनाएंगे. We'll create a admin section where we'll create a form, right? I was thinking of more of a URL based approach, but चलो ये करते हैं. But for that we'll need time. तो एक काम करते हैं, let's quickly start with pagination. ठीक है people, clear है pagination क्या होता है? Anyone any doubt in pagination? नहीं, ठीक है. तो एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर HTML पेज एंड इसमें लेट्स क्रिएट अ सेक्शन अगेन एंड दिस सेक्शन इज गोना बेसिकली होल्ड 3 buttons, राइट? तो फॉर नाउ अगेन हियर let me create a class and this will be container, right? तो let's go and access, we are gonna like append everything here, यहाँ पे append करेंगे. तो let's go in product.js and yeah, let's create a function. So let pagination equals to less than, right? So we are gonna create a basic pagination for now. Usme will be having a previous button, right? Then we'll be showing page number, किस page number पे है, and then we are gonna have next button, right? ये pagination देखिए guys on websites, I hope you have seen, right? So it's a bit of dynamic type of pagination जहाँ पे we are able to update page number based on which page we are. ठीक है, तो let's create these buttons. So let's create a previous button and document dot create element, and this thing is gonna have a button, and let's have a next button also, document dot create element, and this is gonna have your button. Take let's add inner text and inner HTML. So previous dot inner HTML equals to this is gonna be previous button, and same thing goes for this thing. So the next wala button will be your next button. All right, and then we should show which page is there. So let page number equals to document dot create element. Let's create a button only, and उस button पे क्या करेंगे ना, we are gonna put the page number. So inner HTML equals to, अच्छा, you guys tell me, should we keep page number static or dynamic? What should be there? Page number static होगा कि dynamic होगा? Dynamic. So if we're going to next button, if we're clicking next page, we should be updating that page, right? So for that we'll need a variable, right? Counter याद है, counter याद है, counter guys remember. तो क्या करते थे counter में? If we were clicking that plus button, we were increasing the count from 1 to 2, right? और अगर हम minus button दबाते थे तो we were decreasing the count from 2 to 1. We have to create a counter in here, somewhat like that. So let's create a global variable. Let current page equals to 1, right? Because by default starting page is gonna be 1, right? So यहाँ पे let's have this current page. Okay, and what should happen when I click on previous? Previous पे click करूँगा तो what should happen there? Page का क्या होगा? Minus minus. We should go back, right? तो ठीक है. Previous dot add event listener, and when this thing is clicked, what we have to do is we have to basically do a current page plus plus. ठीक, and same thing goes in here. यहाँ पे क्या करना है? Next dot add event listener, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस. ठीक, तो बेसिक लॉजिक क्लियर है कि हम प्लस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, माइनस माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे. ठीक, बट आगे पीछे जाने के लिए डू वी नीड टू डील विद यूआरएल? यूआरएल के साथ डील करना पड़ेगा ना, सो दैट वी नो कि यूआरएल को क्या क्वेरी देनी है. वी आर गोना गेट ओनली दैट पर्टिकुलर डेटा.
सो लेट्स गो एंड चेक जेसन सर्वर आउट और देखते हैं कि उस पे पेजिनेशन का कोई सिस्टम है कि नहीं है. तो डू वी हैव अ सिस्टम, राइट? दिस इज पेजिनेट एंड उसमें if we are accessing a specific URL, तो let's say हमारे पास product है, तो we can make a query कि in which page we are. So let's say if we are in first page, then we can make a query कि उस page पे how many data we want to show, right? Now this per page goes for your default data. We're going to use limit for that. Let me show you. बोलने से बढ़िया let me just show you. So let's go for products, right? यहाँ पे if I want to make a query, I'm gonna write question mark. Yes, and we have to write underscore page equals to 1, right? So let's go and write page 1 and let's see क्या मिल रहा है. So yeah, we are getting some data. By default, how many data are we getting? By default 10. Okay, let's see. So अगर मैं page 2 पे जाऊं and if I press enter, let's refresh it again. अच्छा ठीक है, हमारे लोकल होस्ट पे वी हैवंट एडेड मोर देन 10 डेटा, तो ठीक है. सेकेंड पेज पे वी डोंट हैव एनी डेटा, राइट? रिमेंबर यहाँ पे db.json में वी जस्ट हैव एडेड 10 डेटा, राइट? तो ठीक है, वी वांट टू डिवाइड इट इन दिस मैनर कि पहले पेज पे वी आर शोइंग 4 डेटा एंड दूसरे पेज पे वी आर शोइंग अनदर 4 डेटा, राइट? तो बेसिकली हमें लिमिट के साथ जाना है, तो आई एम गोना राइट अंडरस्कोर लिमिट एंड यहाँ पे लेट्स गो विद 4. ठीक, तो इफ आई प्रेस 4, अभी हमें पेज 2 पे वी हैव लिमिटेड. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम पेज 1. सो यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद आईडी 1 एंड वी हैव ओनली 4 डेटा, राइट? तो सिर्फ 4 डेटा ऐड कर रहे हैं. उसके बाद लेट्स से वी हैव टू गो एंड ऐड 2. तो अभी वी हैव द अदर सेट ऑफ 4 डेटा, राइट? एंड लेट्स से वी हैव 10 डेटा, तो नेक्स्ट पेज पे कितने डेटा मिलेंगे? पेज 3 पे एनी गेसेस? पेज 3 पे कितने डेटा आने चाहिए? 2, राइट? 10 डेटा है हमारे पास. फर्स्ट पेज पे 4, सेकंड पेज पे 4, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद 2 डेटा, राइट? सो लेट्स सी, इफ आई प्रेस एंटर वी आर गेटिंग द रेस्ट 2 डेटा. क्लियर है? तो एक सेकेंड, अगर पेजिनेशन नहीं हो एपीआई में देन कैसे करते हैं? अच्छा, ट्रस्ट मी, अगर कोई एपीआई बना रहा है ना तो दे क्रिएट एपीआई विद पेजिनेशन. मान लो by any chance the pagination is not there, then you can apply internal pagination. कहने का मतलब let's say we are getting थोड़ा सा लॉजिक एक्स्ट्रा लगेगा बट वी आर गेटिंग डेटा, राइट? एंड दिस डेटा इज 16 डेटा हम गेट कर रहे हैं. वी कैन डू दिस सिंपली बाय राइटिंग डेटा डॉट लेंथ. कैन वी फिर क्या करेंगे? लेट्स से कि इफ वी वांट टू सेट द लिमिट एट 4, तो हम क्या करेंगे? वी आर गोना डिवाइड दिस डेटा डॉट लेंथ बाय आवर लिमिट, राइट? लेट्स अज्यूम कि लिमिट अभी के लिए 4 है, तो हाउ मेनी पेजेस एम आई गोना गेट? कितने पेज मिलेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 4, 4. तो वी नो कि विल हैव टू क्रिएट 4 पेजेस के बटन. दैट्स हाउ it gets a bit logical, but then again not something that we have to deal today. ठीक, although API में pagination will be there, but again if there is not pagination, then you can create internal pagination. That's not an issue. ठीक है, चलो back to in here. So now again let me just get that URL. Let me get that URL. Now basically what we have to do is we have this URL, right? What do we have dynamic in that URL? Which shows certain number of products, then on further scrolling, same amount of product gets loaded. Is that also a type of pagination? No, that's not. That's something which is called infinite scrolling. ठीक, तो for telling you guys about infinite scrolling, I'll need to tell you guys about something which is called debouncing and all. ठीक, आएगा, अभी आएगा. इफ आई एम एबल टू कवर इट इन नेक्स्ट लेक्चर दैट्स फाइन, नहीं तो क्लोजर वाले लेक्चर में आई ट्राई टू कवर इट. ठीक, 2 टॉपिक्स, इट्स कॉल्ड थ्रॉटलिंग एंड डीबाउंसिंग. दैट इज व्हाट यू अप्लाई फॉर इन्फिनिट स्क्रोलिंग. ऑलराइट, ठीक है. सो चल बैक टू दिस वन. फॉर नाउ
for now, what do we have to make dynamic in this web page URL? Pages, right? So we just have to update this pages, and how, which variable can be used to update that page? Current page, current page. तो अगर मैं अपने पेजेस पे ये करंट पेज वाला वेरिएबल भेज पाऊं, will I be able to create a dynamic page set? राइट, तो ठीक है, यही करेंगे हम लोग. वी आर गोना अपडेट आवर ओरिजिनल यूआरएल, दिस वन विद आवर पेजिनेशन वाला यूआरएल, बट ब्रेक के बाद. ठीक है, आई जस्ट सॉ द टाइम. ठीक है, you guys need some time to regenerate, refresh. तो जाओ, have a break of 3 minutes and then get back. ठीक, by 11 get back. All right, everyone back. It's very messy. Okay, so I could have gone with a new page, but then I wanted to show you guys on your initial application only, right? Because I'm hoping you guys have created this application by yourself also. ठीक, तो उसको फिर उसको अपडेट करके अगर मैं उसमें नई चीजें ऐड करता हूँ ना, तो दैट विल बी अ बिट मोर बेटर एक्सपीरियंस. ठीक, उसमें क्या होता है ना कि यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ ठीक है, वेबसाइट वहां पे छोड़ी थी, उसके बाद उसको कैसे अपडेट करें, राइट? तो रिफैक्टरिंग इज अ थिंग दैट विल नीड टू लर्न, बट ठीक है, ठीक है, नॉट एन इश्यू. धीरे धीरे ये बनाया था, बट अपने वे में बनाया था, दैट्स फाइन हर्षद, दैट्स फाइन. अपने वे में बनाया था, मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में बनाया था, दैट्स फाइन. ठीक है, तो अगेन आई होप यू गाइज नोटिस समथिंग कि
we are like writing 4 different fetch on this web page, right? 4 fetch लिखे हैं हमने in total so far in this web page. Yes, no, people, right? तो API जो अभी हम यूज कर रहे हैं, is it paid or free? फ्री, ठीक है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के एपीआई होते हैं ना, दोज आर पेड। ठीक, मान लो किसी ने अपना बैकएंड AWS पे होस्ट किया है, राइट, Amazon वेब सर्विसेज पे होस्ट किया है, तो देयर इज अ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। इट्स अराउंड लाइक इट्स बेस्ड ऑन कितना आपने कॉल किया है उसको, एपीआई को, राइट। तो वो सब्सक्रिप्शन में इफ वी आर लाइक क्रिएटिंग 4 डिफरेंट फेच, that's not something that should be viable in that case. Fetch सिखाने के लिए I've made 4 fetch requests, but if I had to create a web page for my organization ना, मैं क्या करता, I would have fetched the data first time, right? यहाँ पे बस एक fetch मारता and I would have created everything from this data only. ठीक, that thing is called optimization. ये जो filter बनाया है, don't you think I can create it by using this filter data? Guys, with me, right? All I had to do was ये product access करके I wouldn't even have to make this fetch call. मैं क्या करता, जो category section है ना, category section है, मैं क्या करता उसकी frequency निकाल देता, right? तो by getting frequency am I gonna get category, just the category जो appear हुए हैं पूरे objects में, right? तो वहां पे मैं category URL का यूज कर लेता, I wouldn't have to make this fetch request. Then sorting and filtering, that's purely higher order functions, people. ठीक, बैकएंड में भी जाके वो लोग हायर ऑर्डर फंक्शन ही यूज कर रहे हैं। जब बैकएंड लिखना सीखोगे ना, आई होप कैप लर्न्स बैकएंड, अगर कैप बैचेस सीखते हो तो यू विल सी कि बैकएंड में भी जाके फॉर ईच और मैप और फिल्टर ही कर रहे हैं। ठीक, बट देन अगेन क्या होता है कि फ्रंट एंड में इट मेक्स इजियर फॉर अस, वी डोंट हैव टू गो एंड राइट फिल्टर एंड ऑल। ठीक है, तो अभी के लिए दैट्स फाइन, वी आर क्रिएटिंग स्मॉल वेब पेजेस। अगर आप 10 इफ यू इवन क्रिएट फॉर 10,000 डेटा ना फेच के लिए, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। बट जब मल्टीपल डेटा बढ़ने लगते हैं ना, देन वन फेच रिक्वेस्ट इज गोना यूज एवरीथिंग। ठीक, तो आगे चल के यू लर्न समथिंग विच इज कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। ठीक, तो जब फ्रेमवर्क्स भी पढ़ोगे, लाइब्रेरीज पढ़ोगे, तो वहां पे क्या होगा, एक बार फेच मारोगे एंड यू आर गोना री रेंडर योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैट फेच ओनली, एक फेच पे। ठीक, तो अगेन पैसेज लिखने से पहले एबीसीडी सीखना पड़ेगा, तो ये एबीसीडी सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए, फिर आगे के काम करेंगे। ऑल राइट, ठीक है, बैक टू आवर पेजिनेशन। हमारे पास करंट पेज है, वी आर अपडेटिंग दैट करंट पेज, वी आर नॉट शोइंग दैट बटन। क्विकली टेल मी, बटन को अपेंड करना पड़ेगा, राइट? तो हमें बटन कहाँ पे अपेंड करना था, कंटेनर पेजिनेशन। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, आई एम गोना राइट दिस एंटायर थिंग अगेन, एंड यहाँ पे लेट मी जस्ट गेट लेट पेजिनेटर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसके अंदर डॉट ये हो गया। ठीक, now I'm just gonna append all the 3 buttons there. So कहाँ गया ये रहा pagination, we have to append also. So paginator dot append, and I want to append previous, I want to append page number, and I want to append next. Okay, so if I refresh it, I still don't have those buttons. Why? पेजिनेशन, ठीक है, हमने पेजिनेशन फंक्शन कभी कॉल नहीं किया है, राइट? पेजिनेशन वी हैवंट कॉल्ड इट येट। व्हेन शुड वी कॉल पेजिनेशन? जैसे ही हमारा डेटा लोड होता है, शुड बी शो देम पेज का ऑप्शन, राइट? तो वंस दिस फंक्शन इज डन रनिंग, आई एम गोना कॉल पेजिनेशन। ठीक है, सो नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, we still don't have pagination function. Okay, we're loading the data and then we have to append it inside function.
oh. Yeah. ठीक है, तो नाउ वी हैव दीज टू बटन्स, राइट? अब बस हम लोग को इसको डायनेमिक बनाना है। All right. So now that we are updating our current page wala variable, what we should do is we should update this URL based on that, this products one. Yes. Yes. So yeah, let's get that URL. This one. No, ये वाला नहीं. Let me get it from our local host. This one and get that. We have to make it dynamic, so we are gonna go for this, and यहाँ पे the page should be dynamic, right? The page dynamic बनाने के लिए we are using current page. ठीक. Now there will be a issue क्या होगा? By default we have to give current page some value, right? So we don't want to leave it on our global variable. So have I told you ever about default parameters? Yes, right? तो default parameter में क्या होता है? You can provide a default value. So let's say I have a page and that page has a default value of current page, right? So if you are calling this get data without any page value, no, this page value by default will have its value as that one, right? So by default, if user hasn't selected anything, I want my value to be 1. Tick. And now I will be calling this function get data function with my page number. So pagination में जब भी we are doing current page, should I call my function this one get data with the page number? Yes, no, will do. Yes, no, will do. पहले तो ये बताओ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 0 लिखो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, 1 लिखो अगर समझ आ रहा है तो, और ये अटेंडेंस भी है ताकि मुझे पता लगे कितने लोग हैं यहाँ पे. ओके 0. ठीक ठीक, तो यार बताओ ना, तभी तो मैं हेल्प करूंगा. पेजिनेशन क्लियर है? यहाँ पे इतना पार्ट जो बनाया है, बटन क्या कर रहे हैं और बटन अपेंड किया है, इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे what we are doing is we are creating dynamic URL. Check. Now when the user visits the page very first time, he's gonna he hasn't clicked any button, right? उसने pagination button click नहीं किया है. So by default he should be sent to page number 1, right? तो हमने क्या किया, we did a bit refactoring here also. We created a page argument, and that page argument has a default value of 1, which is current page. ठीक, तो this is default value. Default value clear है guys? नहीं है तो जल्दी बताओ, I will get that cleared quickly. Anyone with default value का doubt? नहीं, ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ. Now all we have to do is we have to call this get data function with whatever page that we want to call it with. ठीक, तो मैं क्या करूंगा, it's simple as it sounds. यहाँ पे जाके I just have to call get data function with current page, right? Whatever current page is, and there also, so get data, and I'm gonna put it current page. ठीक है, तो let's go and check our application. So application में by default we are on first page and we have only 4 set of data, right? Because we have limited that data to 4. Shall I click next? So if I click on next, we're getting on the next page, but some issue is going on there. क्या है वो issue? But if we give current page inside backtick, won't it take value stored in variable? Santosh, yes, it will. But then here's the thing. This function will be dependent on a global variable, right? So here's a small thing. If you have parameters in a function, no, you don't want it to be dependent with global variable, right? Because हमें क्या करना है? We have to call that function again and again with a certain value, right? So it's better to give it some value so that we can update it. Make sense? Santosh, does that make sense? All right. Okay.
सो रिफ्रेश नहीं कर रहे, वी आर नॉट क्लियरिंग द इनर HTML, राइट? राइट, ये पेजिनेटर का जो कंटेनर है, वी आर नॉट क्लियरिंग इट. So whenever this function is running, we are again creating element and we are again pasting it. We should fix that. No? तो क्या करना है? It's simple. All we have to do is we have to get that paginator वाला parent and we have to do inner HTML equals to m. Right? So if I am visiting next page, that's fine. Next page, that's fine. Right? तो concept इतना बड़ा था, but applying pagination, is it that tough? हमने बस ये function बनाया है. We have called that function when the page is loading and we are calling it based on this. That's all. That's all. ठीक. But sir, वो category वो वही रह रही है ना? मतलब if you go previous and let's say let me go and mix the data a bit. Let's go and db.json. Okay, मैं समझा. What's the issue? एक second. Who had that doubt? Shake code out there, right? Issue क्या हो रहा है? Jyoti will come to that. एक second. Let me help him that. Issue क्या हो रहा है? When we are कहाँ पे option कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे, right? When we are iterating over that object, by default हम पहले electronics को दे रहे हैं, right? So we can fix that. How can we fix that? We can create an option, right? And that will be document dot create element. And यहाँ पे I can write option. And इस option का dot inner HTML is gonna be it's gonna be categories, right? And फिर मैं उसको select में append कर दूँगा. ठीक. तो now you won't be seeing a single category. अभी आपको हर एक पेज पे category दिखेगा and then you can go and select it. Right? No, it's not sorted. वो db.json में it's already sorted. That's why. Right? तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये देखो. Men's clothing, then फिर men's clothing, then फिर men's clothing. I'll have to fix it. But then again, issue क्या होगा ना कि the IDs are same. Right? So yeah, let me just do that. Let me get this thing. And let me put it somewhere here. Okay, and let me get this thing. This one is jewelry. So yeah, I'll put it somewhere around here. Check. Okay. So if I go back now, you'll see कि that's fine. Right? वो data already sorted है. ठीक है? Any other issues? All right. तो ठीक है. There was a doubt, a 0 page and above 3 page. ठीक है. ठीक है. तो guys, यहाँ पे there is one small issue, right? And उस issue को in programming और coding we call it क्या बोलते हैं? मैं भी भूल गया. It's called edge cases, right? मतलब worst case scenario में क्या हो सकता है? So what can happen in this pagination? Worst case में we have page number 1. Do we have a page number 0? Yes, no. No, but are we stopping our user from clicking that page number 0? No, right? तो previous पे भी दबाएगा, right? But it won't give anything. So what we can do is, I mean, even though API is fixing that, but that should not be the case, right? Because यहाँ पे 0 should not be there. By default हम क्या कर रहे हैं? हम इसको we are setting it as 1, so that's fine. We should be fixing this, right? A small fix, easy one. क्या करना है हमें? यहाँ पे we just need to check कि if page is greater than 1. Yes. So I'm just gonna get this data and I'm gonna write if current page अगर वो बड़ा है 1 से, I'm gonna have it here. तो अभी इसके पीछे तो नहीं जा रहा यूजर, right? And again, yeah, जीवन again you can disable it. ठीक. And यहाँ पे what do we want user to do?
और ना यहाँ पे कोई केस नहीं, राइट, बिकॉज जेसन सर्वर में क्या होता है ना, देयर इज अ इशू, इट डजंट रिटर्न्स कि कितना डेटा है। ठीक है, तो दैट्स फाइन, यूजर वोंट बी गोइंग बैक। ठीक है, चलो। सो दैट्स देयर। ठीक है, तो पेजिनेशन इज देयर। ठीक, एनी डाउट्स इन पेजिनेशन, हाउ दैट हैपेंड? इट्स सिंपल वंस यू हैव लाइक ओवरऑल पिक्चर अगर समझ आ जाए। क्लियर पीपल, एनी डाउट्स इन पेजिनेशन? नहीं, बिकॉज वी हैव हाफ एन आवर, आई गेस वी कैन क्रिएट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो मे बी वो कवर हो जाएगा। शैल वी गो फॉर दैट? ठीक है, तो इस पेज में नहीं करते हैं। देखो हम क्या करने वाले हैं, वी हैव डेटा, राइट, राइट, हमारे पास db डॉट जेसन में डेटा है, वी आर शोइंग इट, तो वी आर रीडिंग इट। अब क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, वी वांट टू क्रिएट डेटा फ्रॉम आवर साइड, राइट, हम एक नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और उस वेबसाइट पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो लेट्स गो फॉर सी ऑफ दैट क्रड एंड एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। फाइल थोड़े ज्यादा हो गए हैं, आई वुड हैव हैड इट इन कंपोनेंट्स फैशन, बट ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। लेट मी क्रिएट एडमिन पेज, ठीक, एंड नॉट जेसन, HTML, रीनेम कर, इट्स गोना बी HTML। ठीक है, so let's have that page real quick. uh, this one is gonna be a heading, so let's have a section, and यहाँ पे I'm gonna have the ID of class, and this one be container navbar, और यहाँ पे for now I'm gonna have a h2 which is gonna be heading। ठीक है, सो प्रोडक्ट पेज से एडमिन पेज में जाना है, एनी एनी समहाउ कैन वी डू दैट? प्रोडक्ट पेज से एडमिन पेज में जाने के लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इजी, या फिर एंकर टैग यूज कर लो। ठीक, तो ये प्रोडक्ट HTML ये रहा। navbar में let me go and add a button which is gonna be called your admin, admin, right, and uh, यहाँ पे let me create an ID, and this one will be admin. So let me just quickly access that ID. Let admin equals to document dot selector, and that will be, was it ID? ID था। So let's have ID, and इसमें admin button dot add event listener. Whenever this thing is clicked, I want to run something which is basically window dot location dot href, and कहाँ पे भेजना है हमें? admin page dot html। ठीक है, and let me refresh it। कहाँ गया admin page? Admin button is there, and wait, where is the button? navbar dot inner html gets clear, अरे बटन, ये क्या हुआ? ओवरलैप, या ओवरलैप हो रहा है। 28 लाइन, दिस वन शो डेटा navbar डॉट इनर html, ओके, या माइट बी। ठीक है, नॉट एन इशू, तो हम यहीं पे कर देते हैं। लेट्स गेट दिस, एंड लेट मी जस्ट कमेंट दिस वन आउट, यहाँ पे ही लेट्स क्रिएट दैट बटन। सो लेट admin button equals to document dot create element, it's gonna do a button, and उसमें I'm gonna add this, and I just have to append it, तो
uh, navbar dot append and admin button. ठीक है, so इसके अंदर I'll need to provide inner HTML, so admin dot inner HTML equals to, ठीक है, so if I click on this button I'm visiting admin page. ठीक है, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर द हेल्प. चलो, तो अभी एडमिन पेज पे बनाते हैं एडमिन पेज. ठीक है, यहीं पे स्क्रिप्ट पे लिख देता हूँ, राइट. सो we have to create new. ठीक है, सो गाइस बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डेटा को पोस्ट करना है, राइट, क्रिएट करना है. तो उसके लिए हमें जो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, इट वोंट बी गेट, राइट. बाय डिफॉल्ट अगर आप फेच करते हो ना, बाय डिफॉल्ट इट गोज फॉर गेट रिक्वेस्ट. ठीक, तो अभी तक यू हैवंट सीन मी राइटिंग गेट एनीवेयर, बट अभी क्या होगा, नाउ विल हैव टू मेक पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड https methods, राइट, https methods. एंड आई एम रियली होपिंग कि MDN पे ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो आई वोंट बी फाइंडिंग इट हियर. प्रिटी श्योर फेच में होगा, तो फेच API MD. सो फेच में ये या, ठीक है. तो देखो, जब फेच लिखते हैं ना, तो वी हैव टू पोस्ट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मेथड. ठीक, हमें फेच के अंदर जब भी हम फेच करते हैं, वी हैव टू राइट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मेथड. बाय डिफॉल्ट गेट इज ऑलरेडी देयर, तो वी डोंट हैव टू राइट गेट. बट अभी ये करना है, हम वी हैव टू क्रिएट आवर डेटा, तो विल बी राइटिंग मेथड पोस्ट. ठीक, देन वी डोंट नीड मोड, वी डोंट नीड कैश एंड ऑल, विल नीड आवर हेडर्स, राइट. हेडर्स में क्या आता है, what type of content you are posting. तो we are posting JSON file, तो we'll go with this. and then finally क्या पोस्ट कर रहे हैं. ठीक, for now it won't make sense, एक काम करते हैं, first let's go and create the data that we have to post. ठीक है, so the data should be there. तो हमें क्या क्या डेटा चाहिए, admin where is the db.json. ठीक है, तो let's take this as a response. And ठीक है, तो we have to take these objects as a data, right. put and patch same, not exactly Santosh. Patch में क्या होता है ना कि if you have to just send one or few data you go with patch, but like update one or few data. but let's say कि you have to update multiple data, so you can go with put. ठीक, again something you can try later. ठीक है, so yeah, here so we have to create object which is gonna have ID, title, price, description, category and image, right. For now rating है, तो it will take a bit time, तो rating I'm gonna keep it as static, right. but these things should be dynamic, right. so admin page पे should we create a form ताकि we are taking user input from that form. प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है उन्हें, व्हाट डू दे हैव टू कीप द प्राइस, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, कैटेगरी क्या रखनी है. शैल वी गो फॉर दैट पीपल. यस, यस, ठीक है, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल हैव टू क्रिएट अ फॉर्म, राइट. तो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म सेक्शन. अच्छा, फॉर्म कब पढ़ा था, याद है क्या, फॉर्म कैसे कराते हैं गाइस, फॉर्म गाइस रिमेंबर इट, फॉर्म याद है क्या. ठीक है, तो हैव यू गाइस ट्राइड फॉर्म, लाइक कंसोल करके देखा क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, एनीथिंग इन ऑल. विल ट्राई टू डू फॉर्म अ बिट डिफरेंट वे टुडे. ठीक है, चलो. सो वी डोंट नीड टू गिव इट, ओके लेट्स गिव इट अ क्लास. सो कंटेनर के अंदर का फॉर्म, राइट. आई बेट यू गाइस हैवंट ट्राइड दैट. ठीक, सो लेट्स टेक अ इनपुट एंड इस इनपुट में लेट्स कीप अ प्लेस होल्डर देयर. It's gonna be there for title, right. ID is something that we can give by ourselves, so we'll go for that only. And placeholder, and this one be price. And yeah,
we have three more input, right? So iska placeholder is gonna be a description, right? And the next one is gonna have a placeholder of category, and the next one के पास placeholder होगा of image, ठीक, or other image URL. All right, and finally we have a submit button, right? So we have a type sub. याद है form people. ठीक. So now in script, let's access this form. So let form equals to document dot query selector, and इसके अंदर dot container के अंदर the form and form dot add event listener. फॉर्म का इवेंट क्या होता है पीपल? फॉर्म का इवेंट क्या होता है? सबमिट, राइट? तो आई एम गोना सबमिट दिस थिंग, एंड इसके सबमिट पे I'm going to call a function, but the function will need to call it inside an anonymous function. Qt will have to do prevent default, right? So I'm going to write handle submit, and it's going to have an event. I'm going to pass the events from here, and okay, let handle submit. It's going to have event, and I'm going to do console.log, right? And we have to do event.prevent default, right? So prevent default. Chicken. So we have created a basic form. Let's say if I submit it, we are getting the data. Chicken. How do we get the data? Form से data कैसे मिलता है? You guys remember dot value? But फिर ठीक है. Dot value से पहले we'll have to write target or not? No. So in select, ठीक है. Then we'll have to then access the input specifically. Yes. Like input के लिए हमें वो बनाना पड़ेगा query selector and all. Yes. ठीक है, एक नया तरीका सिखाता हूँ. These things like form is a parent. तो इसके अंदर input is gonna be child. Child node किस format में मिलता है in our console? Array, child node, list, array, right? So we can use that. See, so let's say I'll need to first console. मुझे देखना पड़ेगा. Even I don't remember क्या था. Let's say if I write event.tag, right? So if I fill some, let me submit it. We are getting the form, right? So what I can do is I can just have let title equals to let me create let form data, I guess, equals to event.tag. So I can do form data and pehla element dot value. Then I can do let price equals to form data first element dot value. Right? We can do this way. Does that sound fine? ये तरीका? Or you guys skeptical? लग रहा है कि it might give issue. Fine, right? So yeah, you can go for this. फिर आपको you don't have to give specific ID to each and every input. ठीक? तो again, I hope कि आप लोगों ने try किया होगा. But ठीक है, कोई नहीं. Form data and let's fill to dot value and let category equals to form data. This will be 3 dot value, and finally we have image. So let's have image. What import? Image equals to form data and 4 dot value. Take. Then we have these data. We'll have to create an object. So let object equals to this. In that object we need ID, right? हमें ID चाहिए. So for now we'll go with our original ID math.random,
एंड इसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे तो वी आर गोना जनरेट अ रैंडम आईडी. यस, रिमेंबर आईडी वाला मेथड. आज बिफोर दिस लेक्चर डिड यू गाइस हैड एनीथिंग? कुछ था क्या? नो. सो पीपल लीव क्यों कर रहे हैं? वही, ठीक है. आई होप लेक्चर ज्यादा बोरिंग नहीं हो रहा है. ओह, ऑल राइट. ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई गेट इट. चलो ठीक है, तो आईडी है. एंड लेट्स गो विद टाइटल. ठीक. सो अगेन गाइस, ES6 वाला ऑब्जेक्ट, ES6 वाले ऑब्जेक्ट्स में, ES6 में की और वैल्यू का की मतलब अगर मुझे टाइटल रखना है एंड द वैल्यू इज अगेन टाइटल, डू आई हैव टू राइट द वैल्यू? नो. ठीक है. आई 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 रिमेम्बर कि मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, बट दिस थिंग केम इन ES6. ये चीज ES6 में आया था. ठीक है. सो अगेन इफ समवन आस्क एग्जांपल्स, आपको पता है स्प्रेड, डिफॉल्ट, ये सब, एंड दिस थिंग आल्सो इज ऑन ES6. सो वी हैव प्राइस, वी हैव डिस्क्रिप्शन, एंड वी हैव कैटेगरी, एंड वी हैव इमेज. ठीक है. एंड वी हैव रेटिंग आल्सो. तो दिस विल गिव एन एरर अगर हम रेटिंग पुश नहीं करें. फॉर नाउ आई एम गोना मेक इट स्टैटिक. ठीक. यू गाइस कैन गो एंड एक्सप्लोर. इसको डायनामिक बनाओ. दैट्स फाइन. ठीक है. So if I submit this form and if I console.log this object, let's see. Let's see. So I'm passing some title. I'm passing a random price. I'm passing some description. I'm passing a certain category. So if I submit it, yeah, we are getting our object. ठीक. The object we have created. Now it's time to send this object in our database. राइट. फॉर नाउ हमारा डेटाबेस क्या है? db.json. ठीक. तो अभी क्या करना पड़ेगा? अगेन विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम फेच. ठीक. बट क्या हमें मेथड यूज करना पड़ेगा? क्या हमें मेथड यूज करना पड़ेगा? एंड विच मेथड डू वी हैव टू यूज? हमें यूज करना पड़ेगा पोस्ट मेथड. ठीक. सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अगेन अ फंक्शन. एंड ठीक है, फिर से इस फंक्शन का नाम रख देते हैं फेच. क्या नाम रखा था पिछले वाले का? fetch operator, right? So I'm gonna name it as fetch operator, and this thing is gonna have access to object. So I'm gonna call a function. Let's create this function, fetch operator, and it's gonna have element, and that element is nothing but this object. Okay. So I'll need to send data in here. Okay. So let's create let URL, right? तो URL is nothing but जहाँ पे आपको पोस्ट करना है, राइट? तो हमें कहाँ पोस्ट करना है? विल हैव टू पोस्ट इट इन प्रोडक्ट्स. ठीक. we have to post it in here. So I'm gonna just access this URL. Yeah. चलो यहाँ पे let's write this URL and we'll need to do a fetch on it. ठीक. अभी फिर से अभी MDN पे ले जाता हूँ और अभी समझाता हूँ क्या क्या हुआ है. So we'll have to provide this fetch. जब भी आपको post request मारना है, we'll be providing your URL, and then in that URL, after that URL, you'll be providing a second parameter which is gonna be an object, right? So let what should I name? Response. Let's go with response. Response, and this is gonna be await, right? So again awaiting, so I should create this function async. Take. So let me write fetch. Take. And first thing first, it's gonna take URL and then ये एक object लेगा and we can pass data in that object. Data क्या pass करने वाले? We'll have to pass the method which is gonna be post, right? So let me just copy this thing. I will be passing the method which will be post, right? We don't need mode for now. We don't need caches for now. We have to go for headers, right? What type of data we are passing? Posting. So I want to pass content type. Let me just
ठीक, and that content type will be JSON. ठीक, so I'm gonna have that, and finally हम कौन सा डेटा भेजना चाह रहे हैं, राइट? तो we'll need to pass this object, right? Let me name it object to prevent confusion. ठीक, we have to send this data in our database. Yes, तो I'll be creating यहाँ पे होगा we have a body, right? So in this body I will be passing object. ठीक, तो we have written the URL के बाद we have one more argument which is this object, and this object is gonna hold three main things. हमारे लिए अभी for now three main things होने वाले. How can we remember this? Even I don't remember this entire thing, but ये तीन चीजें बार बार लिखनी होती है तो मुझे याद हो गई है. If you want to remember it, जाओ MDN पे चेक करो, that's fine. ठीक है, और अगर सीपी पे होगा ना, सीपी पे अगर इवैल्यूएशन हुआ तो आई मेक श्योर कि ये मेथड वहां पे लिखे हुए आपको मिल जाए, ये तीन चीजें. फाइन, ठीक, बट या यू कैन ऑलवेज एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल वाले. ठीक, नॉन ऑफिशियल अगर सोचोगे कि इंटरव्यू में बैठ के गीक्स फॉर गीक्स जाके चेक करूं, नहीं करना है. ठीक, बट अगेन तीन की है, याद रख लो. ठीक, मेथड पोस्ट पैच डिलीट बेस्ड ऑन दैट अभी के लिए हम पोस्ट कर रहे हैं. हेडर्स में द कंटेंट टाइप इज गोना बी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हमें जेसन डेटा भेजना है. एंड बॉडी में वी हैव टू पास वट एवर डेटा जो कि हमें डेटाबेस में सेव करना है. इट्स ऑब्जेक्ट फॉर नाउ. बट अगेन गाइज, सर्वर से बात करने की क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या थी? यार इतना क्यों नहीं हो रही? कंडीशन क्या थी? दैट डेटा शुड बी इन जेसन फॉर्मेट, राइट? तो अभी हमारा डेटा इट्स अगेन इन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग, राइट? दैट्स व्हाई यू माइट हैव सीन डॉक्यूमेंटेशन में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, उसके बाद डेटा भेजो. ठीक, एंड यू सी बॉडी टाइप मस्ट मैच कंटेंट टाइप हेडर. नहीं करोगे तो यू आर गोना थ्रो अ 404 एरर. ठीक, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू json डॉट stringify एंड उसके अंदर आई एम गोना पास माय ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, एंड अगेन दिस इज फेच का एसिंग का वेट. तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट एरर हैंडलिंग ऑल्सो. तो एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं पीपल? एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं एसिंग का वेट में? ट्राई कैच, ट्राई कैच. ठीक, सो या ट्राई, ट्राई के अंदर विल पुट आवर कोड, एंड कैच के अंदर, कैच के अंदर, कैच के अंदर. ठीक, दैट्स जस्ट बेसिक कंसोल whatever error is there. एक काम करते हैं, whenever the user is able to submit, no, let's post an alert कि data submitted successfully. All right, so shall we add data? एक काम करते हैं, we don't have product page का link here, तो let me link our product page quickly. यहाँ पे let's have a button, and that will be product page. And यहाँ पे let me just add a on click, and that will be product page. ठीक, so let product page equals to window dot location dot page equals to admin page product page. Disney. So they click on this product page पे जा रहे हैं, admin page पे. ठीक है, so yeah, let's try to add a data. तो title में what do we want to add people? जल्दी बताओ क्या ऐड करना है? कैप ऐड करते हैं. ठीक, so let's add a cap. Price, it's very expensive, and sun protection or something.
ठीक, ऑल दो वो हम यूज तो कर नहीं रहे, तो मैं इस क्लोथिंग में डाल देते हैं इसको। एंड लेट्स गेट इमेज यूआरएल, सो कैप, लेट्स सी कितना बड़ा है यूआरएल। सो ठीक है, इट्स अ स्मॉल यूआरएल, तो लेट्स गेट दिस। ठीक, सो यहाँ पे यूआरएल में वी आर पोस्टिंग। ठीक, so once we have submitted it, given that we are not getting error, data submitted successfully, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं and let's see if we have the data there or not. ठीक, so let's go next. This is there. Next, do we have our new data? ठीक, तो this is how you can post your data. ठीक, और so far हमने CRUD के दो चीजें कंप्लीट कर ली, क्रिएट एंड रीड। ठीक, इवन db.json में जाके देखोगे तो ये देखो, इट हैज ऑलरेडी बीन अपडेटेड। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वंस अगेन रिपीट, ओके, लेट मी रिवाइज यू एंटायर सेशन, क्या क्या करा दिया मैंने। सो पहले तो प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी रिफैक्टर्ड स्टफ। ठीक, रिफैक्टर किया हमने। कैसे रिफैक्टर किया? वी हैड मल्टीपल फेच लाइंग अराउंड हेयर, we created एक single function for that fetch, right? We created one single function and we use our try catch block. ठीक, fetch क्यों करना था हमें? Because we have JSON data. अच्छा, quickly बताओ JSON data क्यों यूज करते हैं हम लोग? I'm basically asking फायदे क्या? ठीक, तो अगर फायदे कोई पूछते हैं तो बोलना है इजी टू यूज है, प्लस लाइट वेट रहता है, राइट? बिकॉज इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग ना, तो मिलियंस ऑफ डेटा के स्ट्रिंग पास कर दो। ठीक, स्ट्रिंग का डेटा केबीज में ही रहेगा, चाहे मिलियन स्ट्रिंग्स हो। ठीक, तो लाइट वेट रहता है, इसलिए इट्स वेरी इजी टू यूज। ठीक, देन एसिंग फंक्शंस बना रहे थे, इस वजह से हमने एसिंग फंक्शन में एरर हैंडलिंग के लिए वी यूज्ड ट्राई कैच ब्लॉक्स। ठीक, ठीक, और उसके बाद रीफैक्टर एक और चीज किया, सिर्फ फैचेस नहीं, वी क्रिएटेड जेसन सर्वर, राइट? जेसन सर्वर, हाउ डिड वी इंस्टॉल जेसन सर्वर? npm install json server, right? npm install is going to be same for every packages, उसके बाद बस बेसिकली पैकेज का नाम आता है, राइट? तो जेसन सर्वर। अगर कोई इशू आता है, जस्ट विजिट डॉक्यूमेंटेशन और उसको आराम से पढ़ो। ठीक, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत आराम से पढ़ लो, राइट? सो दिस पार्ट वाज इंस्टॉलिंग पार्ट। इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोना हैव नोड मॉड्यूल्स, पैकेज लॉक एंड दिस वन। डू वी हैव टू थिंक अबाउट दीज फाइल्स एट ऑल? फॉर नाउ नहीं, राइट? जब तक बैकएंड नहीं पढ़ रहे हैं ना, तब तक वी डोंट हैव इवन हैव टू थिंक अबाउट दीज फाइल्स। ठीक, बैकएंड पढ़ेंगे तब सोचेंगे। अभी के लिए we have to just think about db.json. To create db.json, either you can create this file या फिर just go and run this command, json server and hyphen watch db.json. This will automatically create db.json file. ठीक, and if you want to run it on your custom port 3000 पे रन नहीं करना है, तो you can write hyphen test. This part is clear. Installing json server and running it, was that clear? All right, ठीक है, तो एक बार it started to run, then all we have to do is हमें उस URL पे फंक्शन कॉल करना है, राइट? हमें उस URL पे सर्च करना था पोर्ट या। ठीक, तो जैसे अभी के लिए व्हाट्स द पोर्ट दैट आवर लोकल सर्वर इज रनिंग ऑन? इफ आई रिफ्रेश इट, नॉट दिस वन, दिस वन, विच पोर्ट? दिस थिंग इज योर पोर्ट, राइट? तो अभी 3000 पे रन कर रहा है। मान लो व्हाई डू वी नीड टू कस्टमाइज इट? फॉर नाउ यू वोंट बी कस्टमाइजिंग इट। जब रिएक्ट सीखोगे ना, देन यू विल सी कि बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है ना, इट रन्स ऑन 3000 ओनली, एंड दिस आल्सो रन्स ऑन 3000, तो इट क्रिएट्स एरर। फॉर नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, बट बाद में यू वांट टू मेक इट कस्टमाइज, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कैसे कस्टमाइज कर सकते। फाइन, फाइन, कुछ इशू ले, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक, get back to package. अभी यहाँ पे we just updated our URLs. ठीक, now we have to make queries. We are using question mark.
all these things, are they going to be same for each and every API? Am I true or am I false? These conditions, these queries are going to be same for every API. Am I true? False? Right? Basically, it's gonna be it's gonna be a bit different for each website, right? Overall same रहेगा, but थोड़ा सा different रहेगा. For that, what do you have to refer? क्या refer करना है? Documentations. ठीक, कोई भी API का सबसे पहले documentation पढ़ना है. All right? ठीक है. Then we just refactored our code. उसके बाद we tried to create pagination. ठीक, तो pagination के लिए we needed 3 components. We needed पीछे जाने वाला बटन, previous button. We needed next जाने वाला बटन, and we needed to show कि कौन से पेज पे है यूजर. तो we needed a page number button. We created that. We created a basic counter, right? So if the user clicks on previous, we are gonna do current page minus minus. If user clicks on next, we are gonna do current page plus plus. But once we have done that, we were running get data function. ठीक, अभी get data function is gonna accept that current page in form of page, and dynamically it's gonna update that page. Yes, yes. So that was pagination. उतना सा ही था pagination. Any doubts in pagination? पेजिनेशन में किसी को भी कोई भी डाउट? नो, ठीक है. उसके बाद वी स्टार्टेड टू लर्न हाउ कैन वी पोस्ट डेटा, राइट? बिकॉज CRUD में देर इज जस्ट नॉट गेटिंग द डेटा, वी हैव पोस्टिंग द डेटा, राइट? क्रिएटिंग द डेटा. So we created an admin page, and there we created a form, right? We were accepting the form, we were accepting the values in this fashion. Hope you learned something new here. And then उसके बाद sorry, we were creating object. ठीक, अभी ऑब्जेक्ट बनाया है तो वी हैव टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी वैल्यूज इन देयर, राइट? तो आई जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड दैट ऑब्जेक्ट. ID, title, price, description, category, image and rating, everything was there. ठीक, उसके बाद we were basically calling fetch again, but this time with a method post, right? ये post कहाँ लिखना है? First you will be passing the URL, comma, we will be passing an object, right? Inside that object we have to write 3 things. First, method क्या है? Create करने के लिए method is post, right? Then we have to provide header कि हमारा content का type क्या होने वाला है? It's gonna be JSON. And finally, in body, we have to pass whatever data we have to create, right? So we stringified it in JSON version and we created. Clear? So far हमने बस इतना ही किया है. ठीक है people? Any doubts? Anything? Right? तो pagination भी हो गया. We are able to access different data, and we have created admin pages also. Take, so yeah, that's pretty much it.